Hi friends, so on behalf of Sonia, I am trying to collate the positions that are there in CA portal. So हमें एक position चाहिए वासिन मुंबई में in the range of 1 to 1.2 crores का CTC must be a seasoned person in the manufacturing domain. So that's the one position that we have. उसके बाद हमें चाहिए डेप्यूटी सीएफओ अगेन फ्रॉम अ वर्सेटाइल मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड. यहाँ पे हमें चाहिए ऑटो बैकग्राउंड, स्पेसिफिकली ऑटो बैकग्राउंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, 12 to 15 years ऑफ वर्क एक्स एंड 70 lakhs से लेके 1 crore तक का इसमें सीटीसी बैंड है. Then we want a finance head for a Series A funded startup, very well funded startup. And इसमें वही लोग चलेंगे जो B2B startup industry से हैं. And they would have seen a turnover of $25 million, मतलब 200 करोड़ के प्लस का टॉप लाइन देखा हुआ होना चाहिए. 60 to 75 lakhs का बजट है. 7 to 10 years of work ex. This will be in Mumbai. यहाँ number of years is relatively lower as compared to traditional manufacturing, but they want very strong business finance experience. That is very, very critical. Then we want a CA who is a functional head of an FP&A. 15 to 20 years of work ex, 50 lakhs का salary है, long term incentive plans होगा, very strong FP&A experience in Pune, specifically Baner in Pune. तो ये एक और पोजीशन है. देन वी वांट अ बीकॉम और अ सीए इंटर, कैलकाटा का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, 6 to 7 years ऑफ वर्क एक्स. सो टिपिकल टास्क लाइक अकाउंटिंग, लेजर स्क्रूटिनी, एमआईएस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. ईआरपी का एक्सपीरियंस मस्ट है. यहाँ पे आपका सिर्फ टैली का एक्सपीरियंस से नहीं चलेगा. 6 से 10 लाख पर एनम का टारगेट है. देन वी वांट समवन हु इज एन एजीएम एट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मुंबई. 50 lakhs पर एनम का उनका बजट है. इतिहास का वर्क एक्स होगा. मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से गुड इंटरनल ऑडिट एक्सपोजर चाहिए. दैट विल बी एन एजीएम पोजीशन इन मुंबई, बीकेसी स्पेसिफिकली. देन यू हैव अ सीनियर फॉर फाइनेंस अकाउंट्स, अगेन 40 से 50 लाख का बजट है. यहाँ पे देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव गुड एक्सपोजर ऑफ इंफ्रा इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर हैम प्रोजेक्ट जो हाइब्रिड एन्युटी मेथड्स होता है. एंड देन यू हैव ईवाई एक्सेट्रा एज द ऑडिटर. सो अच्छा सीजन पर्सन जो अकाउंट्स का कंसोलिडेशन, हैम अकाउंटिंग वगैरह ढंग से जानता हो, वो यहाँ पे दैट्स द आस्क हियर. देन वी वांट समवन विद अ 10 to 12 years ऑफ वर्क एक्स, मैन्युफैक्चरिंग मुंबई अंधेरी में, एजीएम फाइनेंस. बट दिस हैज टू बी ओनली फ्रॉम अ रेफ्रिजरेशन background, so from like a Voltas or a Blue Star or a Carrier. 45 lakhs per annum का CTC है. Then we want someone for secretarial compliances for an NBFC in Kolkata. 20 to 50 lakhs का WorkX का salary है for 10 years of WorkX. Pretty wide range because they're very flexible depending on कि उनको क्या talent is on offer. Then we want a junior guy जो BCom MCom चलेगा, senior executive या executive internal audit and data analytics. कैलकाटा में पोजीशन है. वेरी गुड 2 to 4 years ऑफ वर्क एक्स होने से 8 to 10 lakhs पर एनम आपको मिल जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर दैट इज पर्सन है. देन दिस इज स्टार्टअप जहाँ पे 4 to 5 years ऑफ वर्क एक्स में मुंबई में, बैंगलोर में इन्हें सीएमए या सीए इंटर चाहिए. सो दे डोंट वांट अ सीए, इधर अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ सीए इंटर. एंड रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का प्रोफाइल है. सो एंड टू एंड आपको R2R का प्रोसेस आना चाहिए अच्छा खासा. So 10 to 12 lakhs per annum is the ask here. Then we have people who are required in Sambalpur in Odisha, again in manufacturing, 4 to 6 years of work ex, and 7 to 10 lakhs per annum, assistant officer or deputy officer. So CA inter या BCom. Again, this is not requiring a CA. अगर CA inter हो, BCom हो, good work exposure है, we are fine. We want a BCom or a CPA as a senior tax accountant. 3 years of work ex होना चाहिए. 10 lakhs per annum will be the CTC. So MNC पुणे में चाहिए. Freshers are required for indirect taxes. 10.5 lakhs per annum in Calcutta, including 10% variable. So if the budget is something which fits your aspirations, do apply. Email and phone number साथ साथ दिया जा रहा है. Then you got a senior manager or manager treasury in Calcutta. So the range will be depending on your experience, 11 to 13 for junior roles and 25 to 30 LPA for senior roles. So इनको
ट्रेजरी का अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए, बैंकिंग का, फंड रेज का, एंड ऑल दी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा. देन यू वांट अ सीए फॉर बिजनेस प्लानिंग, एनबीएफसी कोलकाता, 2 to 3 years of work ex, and 14 to 18 lakhs per annum. एक MNC NBFC है in Calcutta, so you must be hands on in terms of business plans and PPTs etc. Then you want a BCom MCom for treasury role. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, 6 से 10 साल का वर्क एक्स में. इवन बीकॉम एमकॉम विल डू. 14 to 16 lakhs पर एनम का रेंज है. देन यू वांट अ सीए एज अ डेप्यूटी मैनेजर टैक्सेशन फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी इन कैलकाटा, 2 to 5 years of work ex at 15 LPA. तो यहाँ पे आपको टैक्स एक्सपोजर होना चाहिए. दिस एन ई कॉमर्स कंपनी, अगेन ये बड़ा स्टेबल सा कंपनी है. 15 लाख रुपए पर एनम आपको मिलेगा फॉर 2 to 5 years ऑफ वर्क एक्स. देन यू वांट अ सीए एट मैनेजर अकाउंट्स फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी इन कैलकाटा. 15 से 20 लाख रुपया मिलेगा, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है. सो दिस अगेन इज अ गुड पोजिशन, नॉट अ वेरी फैंसी हाउस होल्ड नेम बट अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड आइकॉनिक काइंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस है ये. देन हमें चाहिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है हैदराबाद में. 1 to 2 years ऑफ वर्क एक्स में, या तो सीए फ्रेशर हो, मास्टर्स इन फाइनेंस हो, चलेगा. एज अ कंसल्टेंट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स. इफ यू वांट अ डिटेल्ड जेडी यू कैन ऑलवेज ईमेल और कॉल अप दीज नंबर्स. देन फाइनेंस हेड फॉर अ स्टार्टअप, बीकॉम एमकॉम एमबीए, 7 से 10 साल, 15 लाख पर एनम. तो ये एक जूनियर सा रोल है. सो दैट स्टार्टअप इटसेल्फ इज आल्सो इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. तो 15 लाख पर एनम है. देन यू वांट अ सीए एट मैन्युफैक्चरिंग इन उड़ीसा, 8 से 12 लाख ऑफ एक्सपीरियंस फॉर 18 to 20. ये जो टिपिकल प्लांट अकाउंटिंग का एक्सपोजर होता है वो. देन वी वांट अगेन समवन फ्रॉम अ फंडिंग एंड लेंडर कंप्लायंस ट्रेजरी मैनेजमेंट रोल. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है मुंबई में, 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्स, 20 lakhs पर एनम. मुंबई अंधेरी में 40 years ऑफ वर्क एक्स, 18 to 28 है. एफपीएनए इज द आस्क हियर. यहाँ पे ऑडिट एंड कंप्लायंस है. ये भुवनेश्वर का रोल है. 7 years ऑफ वर्क एक्स, 20 LPA इज द आस्क हियर इन टर्म्स ऑफ सीटीसी. देन मुंबई में डायरेक्ट टैक्स 3 to 4 years, 22 lakhs per annum is the CTC. And then direct tax, indirect tax, Mumbai 3 to 5 years, 20 to 25. Again, a different company. So DT IDT skills are quite in vogue. फिर बिजनेस फाइनेंस मैनेजर आईटी कंपनी, बैंगलोर, बहुत स्टेबल, 25 से 30 लाख, 4 to 9 years ऑफ वर्क एक्स. स्पेसिफिकली अगर आपके पास प्राइसिंग एक्सपीरियंस है या बिजनेस फाइनेंस का एक्सपीरियंस है इन आईटी, नथिंग लाइक इट. देन एक ज्वेलरी कंपनी है कैलकाटा में, वहां पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर, अकाउंट्स मैनेजर चाहिए. 30 लाख रुपए तक दे देंगे. अगेन फैमिली ओन्ड बिजनेस, 4 years ऑफ वर्क एक्स प्लस. कोई सीए फर्म में भी काम कर रहा है, अच्छा एक्सपोजर है, विल वर्क. देन यू वांट सीनियर मैनेजर इन एजीएम कॉस्टिंग, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. नवी मुंबई में या भुवनेश्वर में, दोनों जगह है. 10 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, 30 lakhs प्लस. बट कोर कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग का अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए. देन अगेन 42 lakhs में हमें प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए पर्सन चाहिए मुंबई में, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, 5 to 10 years ऑफ वर्क एक्स, 42 LPA इज द आस्कर. बिजनेस फाइनेंस पार्टनर एक स्टार्टअप है बैंगलोर में, 4 to 7 years ऑफ वर्क एक्स, 40 LPA इज द टास्क. अगेन बिजनेस फाइनेंस स्किल्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हियर. देन फंक्शन हेड फाइनेंस है, ये तमिलनाडु में शेयार बोल के जगह है. सो यू वांट अ सीए देयर विद 10 years ऑफ वर्क एक्स, 42 LPA इज द upper limit here. So this is what the ask is, and you can always apply here. And happy job hunting. Thank you.